So before we understand the blood groups in humans, we have to understand the two terms based on which the blood grouping is carried out in humans. One is antigens and another one antibodies. Of course, in today's world, everyone is aware about antibody term. We know the vaccines generate antibody against virus and other antigens. So it's a familiar term, but a scientific biological perspective from which if we see, any antigen is a foreign molecule which can activate our immune system to give some kind of a response against that antigen, then it is called as an antigen. Whenever any foreign particle, any foreign molecule, any foreign material, now when you consider foreign means something which is not a part of our body, that is a foreign material. So any such foreign molecule, as and when enters in our body, our immune system reacts and gives response against that material. Then that material is known as antigen. There are several materials against which body may not react. Our immune system may not show any response. So we can't use the word technically. We can't use the word antigen for them. Are you all clear with the term antigen? Yes, sir. Example, virus, but not as a whole virus. Virus is a pathogen or microorganism, not even micro, it's a pathogenic stuff. Its capsid, the capsid part of it, which comes in our body, that is for our body, that surface, that capsid surface is an antigenic stuff for our immune system. Our immune system identifies capsid as the antigen. Similarly, a bacterium. See, the whole bacterium is a pathogen, a microbe. It is not an antigen. The bacterial cell wall and its surface structures against which our immune system is reacting, these surface features, this bacterial cell wall is an antigen. Similarly, a pollen grain. See, the whole pollen grain itself is not an antigen. It's a pollen grain, it's a cell. The surface structures which are there on the wall of a pollen grain are known as antigens. So by and large, you must have understood what is an antigen. Pathogens on their surface, they carry antigen. ऐसा consideration आपको understand करना पड़ेगा. I hope you all have understood antigen, and still if there is any doubt, I can repeat or can reply to your question. Is it so? Sir, Is can you there explain it again? any foreign molecule which enters in our body, and that time if immune system reacts against it by giving some sort of a response, we consider that foreign molecule as an antigen. When we use the word foreign molecule, it means it doesn't exist in our body. It is not a part of our body components. It is a thing which is coming from outside and it doesn't belong to our body. That is called as antigen. Which are the examples of antigen? If a virus is a pathogen, its surface proteins are, or its surface capsids are, capsid surface of it will act as an antigen in our body. The microorganism such as a bacterium itself is a pathogen, but its a cell wall will be the part which will be accepted as the antigen. Similarly, pollen grain is a cell, but its a surface, its pollen grain cell wall proteins, they will be behaving as the
antigens in our system. So have you all got the idea about the antigen? Yes, sir. Now, Thank you. next is antibodies. So an antigen carrying virus or a bacterium or a pollen grain or any such stuff comes in our system, our immune system tries to neutralize it. Neutralize it means उसको remove करने का try करेगा. In doing so, our immune system, with the help of particularly which cells, it will produce antibodies. Which White cell blood cells. amongst the WBC, which category out of the 5 different types of WBC, which one will produce antibodies? Lymphocytes. Exactly, lymphocytes. Okay, and what is another name of antibodies? Full प्लाज्मा के composition में प्रोटीन के टाइप में पढ़ाया था. Another name of this protein secreted by the lymphocytes in the plasma to counter the anti. Huh? Immunoglobulins. Immunoglobulins they are. So antibodies or immunoglobulins are the protein molecules which are produced by our lymphocytes in order to fight with antigen. They give response against what antigen? Have a look. Here was one antigen. I mean, here was one pathogen with antigens on its surface. And here are the antibodies which will go and bind to these antigens and try and neutralize them so that they don't create any problem. You know, when antibodies will bind with this virus or microbe or pollen, they will not be able to bind with any other thing. So they will be effectless. I mean, they will be ineffective. Now they cannot cause any disease or damage. So alone, an antigen was dangerous. Alone, an antigen was dangerous. Microbe with the antigen was dangerous. But when antibodies binded with it, it became harmless. The binding of antibody is possible because the shapes of antigen and antibody are complementary to each other. So they fit into each other. So antibodies bind with them. And when they bind, we say agglutination has occurred. Binding of antibody has taken place to the antigen. So we say agglutination. Agglutination neutralizes the antigen effect. ये पैथोजन और एंटीजन की इफेक्ट को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है. तो मैंने एक जनरलाइज्ड आइडिया आपको रिवील किया रिगार्डिंग द टू टर्म्स एंटीजन एंड एंटीबॉडी. Reason behind that is our entire topic of blood groups is fully based on two terms: antigens and antibodies. Simple as that. So let's talk about blood groups in human. You must have heard about sometimes blood transfusion is required. Have you heard about that blood transfusion is required? From some donor, blood will be provided to the recipient. Yes, sir. Condition in which a recipient is met with an accident or during the delivery, lot of blood loss is there, or else the person is suffering from thalassemia kind of disease in which blood change is required in every 10-15 days. Or recipient has to go for surgery. In any of these scenarios, people require blood which will be transferred from the healthy donors. This process is known as
blood transfusion. Whenever blood transfusion occurs, it is ensured that proper blood group, I mean, person with a particular blood group can only donate the blood to the person with a particular blood group as a recipient. So, compatibility, the term what is called as compatibility, कि भाई इसका blood group इसको ही work कर सकता है. Compatibility of donor and recipient needs to be checked regarding blood groups, that do they have a proper blood groups which can match with each other. If you transfuse, that blood will be accepted and will not be rejected. Then that aspect is considered as the compatibility. So while we work out the compatibility of the donor and recipient's blood group, we match their blood groups. So at that time, we should know which blood groups are matched. So one of them is ABO blood group, another one is RH blood group. Actually, in humans, there are 20 different types of blood groups that can be worked out. Just say one of them is RH blood group. Another one is ABO blood group. Another one is CAL. Another one is MNS. Another one is there, which is called Duffy's blood group. Another one is Lutheran blood group. Another one is Bombay blood group. You know, varieties of blood groups we have in our system under consideration, out of which ABO blood group and RH blood group are more important. Let us understand how are this blood group decided. We will discuss about how the ABO blood group is worked out and how the RH blood group is worked out. We don't focus on others. Others are not counted to be much important at the time of blood transfusion, so we avoid their understanding. Point is that human RBCs, on their surface, they possess series of proteins. They possess series of proteins on their surface. These proteins are identified as antigens. Now you will have a question. Why should we call them as antigens? Natural question. They are the part of our body. So why should we call them as antigens? Point is that as long as the RBC of a person remains in his or her body, they are not antigens. But if this RBC goes into another person's body, there they may behave as an antigen. The other person's body may react, its immune system may react against them. So we need to call them as antigens. As many as 30 different types of antigens. मैं अगर एक वैरायटी को नंबर 1 देता हूं, एक दूसरी वैरायटी को नंबर 2 देता हूं, तो ऐसी 30 varieties of antigens can be found on the surface of human RBCs. So that is a one point. Out of those 30 types, 2 antigens, one of them is antigen A and another one is antigen B. Only keeping them in mind, forgetting about that there are other 28. We don't focus upon that. If we just focus upon 2 of them, based on their presence or absence or their combination, we have worked out 4 types of blood groups. And this was done by the scientist named as Karl Lenzner. What's the name of this scientist? Karl Lenzner. Karl Lenzner worked out that out of the 30 different antigens to be found on human RBC, 2 of them are very important one. One of them is antigen A.
Another one is antigen B. Based on presence or absence of these two surface antigens on RBC, either A or B, he worked out that there should be 4 different types of blood groups in human. Parallel to this antigen presence in our blood, when RBCs possess antigens on their surface, parallelly our plasma possesses antibodies against these antigens. So the combi of antigen on RBC and particular type of antibodies in the blood plasma of the same person, system has been devised which can work out 4 possible types of blood groups. Now, before I talk about these 4 types of blood groups, are you all clear about what I am explaining now? Yes, sir. Yes, sir. इतने terms clear होने चाहिए. Blood transfusion, process of transferring blood from healthy donor to recipient. 2, why needed? Recipient may have met with an accident, so blood loss and requirement. May have gone through delivery in which blood loss and again required. May have gone through surgery in which blood is required, or on regular basis suffering from some disease like thalassemia and blood is required. When blood is required, donor and recipient's blood groups are matched to see one aspect. Which aspect is to be observed in them? एक वर्ड मैंने बोला कि दोनों के ब्लड ग्रुप में डैश होना चाहिए. क्या चाहिए? Compatibility. Compatibility term is very important. Remember. Now, to understand the compatibility, we should understand that RBC on its surface possesses antigens. How many types of antigens are present on the surface of human RBCs? 30. Out of 30, some may be present, some may be absent, but variety wise, they are how many? 30. Out of the 30 different antigens, based on their different combinations, humans के 20 different types of blood groups work out किए हैं. उसमें से कौन से 2 blood group सबसे important है? A and B. ABO and another one is RH. RH blood grouping. ABO is a one blood group, RH is another blood grouping. There are others which are Cal and Lutheran and Duffy and others are there, but are of not much significance. Who developed the concept of ABO blood groups in humans? Carl Landsteiner. Carl Lenzner was the one, and he focused upon only 2 antigens out of the 30. Based on their presence and absence, he worked out how many types of blood groups under ABO blood grouping category. 4. 4. One of them is A blood group, another one is B blood group, another one is AB, and fourth one is O blood group. Fine, just give me 1 minute. This is very dark. I need to make a correction. अभी थोड़ा bright appearance होगा, शायद clarity मिलेगी. So now what I was talking about was different blood groups. Have a look at it. A blood group, B blood group, AB and O. This is based on 2 aspects in our body. Which kind of antigens are present on our RBC and which type of antibodies are present in our blood plasma. Out of those 30, the 2 antigens, A or B, out of these 2, which ones are present on RBC, and against them the 2 antibodies A against
antigen A and antibodies B against antigen B. Their presence or absence in plasma. फिर से रिपीट करता हूं. Presence or absence of antigen A or B on RBC and presence or absence of antibodies A and B in blood plasma. Based on that, 4 blood groups. Have a look at the first category, A blood group. Can you see which antigen is present on the on the RBC? A antigen. Which antigen is present over there? A antigen. अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन A प्रेजेंट होना चाहिए. Which antigen is supposed to be present? A. आपके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज होनी चाहिए? एंटीबॉडीज B, जो B को काउंटर करे. आप इमेजिन करिए आपके ब्लड में आरबीसी है और ये प्लाज्मा है. सोचो यहां पे एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए होती तो क्या हो जाता? आपके खुद के एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा में है वो आपके ही एंटीजेंस विथ आई मीन आरबीसीज विथ एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता. सो इन केस इफ यू हैव ए एंटीजन ऑन आरबीसी, you cannot afford to have antibodies A in your plasma. You need to have a antibodies against another antigen and that is B. आपके पास अगर एंटीजन ए है तो आपके पास एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट होनी चाहिए? बी के अगेंस्ट होनी चाहिए. हाउ मेनी हैव अंडरस्टूड? इफ देयर आर 50 स्टूडेंट्स दे शुड लेट मी नो. यस, वी हैव अंडरस्टूड सर. Yes, sir. Okay, many have started participating. Yes, good. I can see that. I appreciate this thing. That's very good. So tell me, if a person has a B blood group having antigen B on the RBC, will have a which antibodies in plasma? A. Exact. Antibodies against A ऐसा बोलते हैं. अगर आपके पास A एंटीजन है तो आप एंटीबॉडीज अगेंस्ट B रखो. In case if you have a B antigen, you got to keep antibodies against A. This is the A blood group. Another one was B blood group. Now tell me, if a person has AB blood group, which antigen should be there on RBC? No one. Both antigens are there. Antigen A is present as well as antigen B is present on your RBC if you have AB blood group. But can that person afford to have antibodies against any of them? No, sir. So here there are no antibodies against A antigen and no antibodies against B antigen. यहाँ पे एक चीज जो आपको याद रखना है इसके लिए स्पेसिफिकली, कभी ऐसा मत बोलना कि पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा. दैट इज रॉन्ग थिंग. अपार्ट फ्रॉम दीज एंटीबॉडीज बाकी के जो नॉर्मल एंटीबॉडीज अवेलेबल होते हैं वो तो होते ही है. एंटीबॉडीज अगेंस्ट A antigen and antibodies against B antigen are not there. Not that any other type of antibody is not there. So is my statement correct if I say that person with AB blood group has no antibodies in plasma? Is my statement correct? No. What should I say? Person with AB blood group has neither the antibodies against A antigen nor the antibodies against B. We need to specify that way. अच्छा, आगे जाते हैं. Person with O blood group, look at that. Neither तो antigen A present nor the antigen B present. A और B दोनों absent है तो क्या कहेंगे? O blood group. देखो सिर्फ A antigen था alone, not the B, तो A blood group. Alone B antigen, not the A, तो B blood group.
both antigens A and B present, AB blood group. Neither A nor B antigens present, then we use the word O blood group. So RBCs without antigen A, without B. Acha, can I say that these RBCs are without any antigen? Am I right or wrong? If I say a person with O blood group has no antigen on RBC. No, I am wrong. आउट ऑफ द 30 वो जो दो कैटेगरी है ए एंड बी वो एब्सेंट है, बाकी के 28 में से कोई भी हो सकते हैं ना. तो वी कांट से दैट वी हैव नो एंटीजन. वी नीड टू स्पेसिफाई person with O blood group has neither the antigen A nor the antigen B present on the RBC surface, so we call it as the O blood group. Acha, that person can afford to have which antibodies against this in plasma? Both. Antibodies against A antigen are there as well as against B, so both are present. बोलो, ये पता चला अब कंसेप्ट पूरा. A blood group with antigen A present on RBC and antibodies B present in plasma. तो B blood group के बारे में ऐसी कोई लाइन बोल पाएगा? मैं A के बारे में एक लाइन बोल रहा हूं. Person with A blood group has antigen A on RBC and antibodies B on in plasma. गालो, दूसरी लाइन तुम्हारी B blood group की. Yes, sir. A person having B blood group will have B antigen on their RBC and A antibody in their blood plasma. Very nice. Disha, your turn for AB. In AB, it is having both antigens A and B in A and B on RBC, but it is neither having antibodies A and B in plasma. चलिए, correct. Having A antigen and B antigen both present on RBC, but neither antibodies A or B in plasma. That is the AB blood group. Shreya, O blood group. A person having blood group O has no antibody A and B on the RBC surface. गलत गलत बेटा गलत. You said No antibodies. antigen, sorry RBC sir, के no ऊपर. antigen A and B on the RBC surface, but have antibodies A and B in the blood plasma. Okay. So I hope you all have understood. Fine. आगे जाते हैं. अब इमेजिन करें कि मैं डोनर और रेसिपिएंट का एक प्रोफाइल दिखा रहा हूं आपको कि डोनर के पास ए एंटीजन है, उसका ए ब्लड ग्रुप है. आप प्लीज इस केस को अंडरस्टैंड करना, है ना. और रेसिपिएंट का बी ब्लड ग्रुप है. तो जब ये आरबीसी में अगर इसको देता हूं तो क्या होगा? गालो, क्या होगा? टेल मी. Yes, sir. जो पर्सन के पास ए एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पे वो बी को देगा तो सर बी विल हैव एंटीबॉडी ए, सो इट विल एक्ट अगेन इट एंड द आरबीसी सेल्स विल स्टार्ट डाइंग. एग्जैक्टली. जो रेसिपिएंट है उसका बी ब्लड ग्रुप, तो उसके पास एंटीजन कौन सा? बी. लेकिन एंटीबॉडीज अगेंस्ट व्हाट? ए. तो इसमें ए एंटीजन अगर आता है तो उसके अगेंस्ट में रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज तो अटैक करेगी और वो आरबीसी को मार देगी. तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया वो उसका बेनिफिट क्या रहेगा? नो बेनिफिट. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? खुशी, रुद्र, श्रेया, है ना. अच्छा, तो इसका मीनिंग ये होता है, मैं एक लाइन बोल रहा हूं आपको अंडरस्टैंड करनी है, कि आरबीसी विथ
A antigen should never enter in the blood where plasma has antibodies A. Agree कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो मैं अगर A is a donor for example, A is a donor, तो ये अगर मुझे भरना है ये चार्ट, to whom can they donate? मीन्स अगर A डोनर है तो उसको किसको डोनेट करना चाहिए? जिसके पास एंटीबॉडीज ए नहीं है। और इसको किसको डोनेट नहीं करना चाहिए? जिसके पास एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए अगर हो तो उसको डोनेट नहीं करना चाहिए। अब मुझे इसमें से लिखाओ ए बी और ओ, उसमें से यहाँ पे क्या आंसर आएगा? किस किस को ये ब्लड दे सकता है ए एंटीजन वाला? AB सर। A and AB. एग्जैक्टली क्यों ए एंड ए बी? दोनों के पास Because they एंटीबॉडीज have antibody B. एग्जैक्टली दोनों के पास ऐसा नहीं लिखने का, दोनों के पास क्या नहीं है? एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेंगे इसका ब्लड। हाँ या ना? Yes, sir. ए वाले आरबीसीज में बी में डाल दो, बी ब्लड ग्रुप वाले में, तो उसके प्लाज्मा के एंटीबॉडीज ए उसको डैमेज करें। ए पर्सन का ब्लड में ओ में देता हूं अगर बाई चांस, तो क्या प्रॉब्लम होगा? ओ के पास एंटीबॉडीज ए है, वो उसके नए वाले आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। सिंपल। इफ आई आस्क यू, बच्चों सुनो केयरफुली, इफ आई आस्क यू, इफ अ डोनर हैज अ ब्लड ग्रुप ए, to whom can he donate the blood? A and AB. And to whom he cannot? B and O. B and O। Exactly. क्यों वो ए और ए बी को दे सकता है? Because they do They not do have not have antibodies antibodies against antigen A. और वो क्यों बी एन ओ को नहीं दे सकता? Because they do have antibodies against antigen A. ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए ना कि डोनर के आरबीसी अगर रेसिपिएंट के प्लाज्मा में सेफ है तो वहां पे कॉम्पेटिबिलिटी है, अगर सेफ नहीं है तो वहां पे कॉम्पेटिबिलिटी नहीं। चलो एक एग्जांपल से पता चलेगा। दूसरा, बी के बारे में कौन बोलेगा? अगर बी डोनर है तो whom can he provide and to whom he cannot provide with justification. Rudra, whom should B donor provide the blood? Yes sir, to B blood group and to AB blood group। बेटा क्यों? Because they do not have antibodies against B, antigen B। Excellent answer. And to whom he cannot provide blood as a B donor? To antigen A and to antigen O। नहीं, to antigen A नहीं, blood group। To blood group A and to blood group O। Why? Because they have because they have antibodies against antigen B। Because yeah, exactly, they have the antibodies against B antigen। ऐसा। अच्छा, AB के बारे में कौन डिस्क्राइब करेगा? श्रेया बोलिए। Sir, they can donate blood to AB and blood groups A and B. इन सबको डोनेट कर सकते हैं ऐसा? Yes, sir. Because they specifically Absolutely do. wrong. Absolutely wrong. आपने समझा ही नहीं। खुशी देसाई। Sir, AB has no antibodies on it, so it cannot मैं donate. सिर्फ ऐसा पूछ रहा हूँ, to whom can they provide blood? Simple as that. As a donor AB, कौन से ब्लड ग्रुप को वो ब्लड प्रोवाइड कर सकता है? To blood group AB, A, B, and O. Absolutely wrong. Zenil Patel. Sir, it can provide blood to only itself, means to AB. Exactly, a person with AB only. क्यों, dear? Sir, because in blood group A they have anti-B antibody, and in B it have anti-A antibody. So destroy of RBC will occur. नहीं, ये गलत आंसर है आपका।
आप ऐसा बोलो, पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीजन है। कौन से दोनों एंटीजन है? ए एज वेल एज बी। Yes. ए बी में एक भी टाइप का एंटीबॉडीज नहीं है, सो दे विल बी सेफ। अगर किसको नहीं डाल सकते, बाय द वे बोल, किस में नहीं डाल सकते ए बी ब्लड ग्रुप? O, O, A and B. क्योंकि तीनों के पास ऐसे कोई एंटीबॉडीज है जो इसके एंटीजन को डैमेज कर सकते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीबॉडीज बी है, तो इसके बी एंटीबॉडीज को डैमेज हो सकता है। पर्सन विद बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडीज ए है, तो इसके ए एंटीजन को डैमेज हो सकता है। और पर्सन ओ के पास तो दोनों एंटीबॉडीज है, उसके दोनों एंटीजन्स को डैमेज कर सकता है। आप लोग कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो ना प्लीज, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपका मैं जो कह रहा हूं? चलो, ओ ब्लड ग्रुप का कौन एक्सप्लेनेशन देगा? रुद्र। Yes, sir. It can donate to all three of the blood groups. 3 ओनली? गलत, और मतलब इधर जो है वो गलत, बहुत ही गलत आंसर। Sir, it is a universal donor. हाँ, Sir, it is Universal donor. donor, so all 4 blood groups. All the all blood. 4। रीजन क्या होगा पता है आपको? उसके आरबीसी के पास न तो एंटीजन ए है न तो एंटीजन बी है। मींस कोई भी ब्लड में जाएगा उसको कोई ऑपोज ही नहीं करेगा ना। कोई भी एंटीबॉडी अगेंस्ट ए और बी है ही नहीं वर्क करने के लिए वहां। आई मीन उसके पास एंटीजन ही नहीं है जिसके ऊपर एंटीबॉडीज ए या बी वर्क करे, तो वो चारों में एक्सेप्टेबल होगा। सो ओ इज द वन हु कैन डोनेट ब्लड टू ऑल ऑफ दैम। How many have not understood this concept? Just now stop me, otherwise next topic नहीं पता चलेगा। What you need to see is that as a donor, your RBC with a particular antigen, if it is safe in other blood, then that blood group is compatible. ये लाइन नोटबुक में लिख लेना, टेक्स्ट बुक में लिख लेना। compatibility के basis क्या है? So if donors RBCs with a particular antigen, मैं धीरे से बोलता हूं, लिख लेना। Compatibility is equal to what over here in blood group compatibility? If donors RBCs with a particular antigen, if they survive in recipient blood, then these two are compatible blood groups. Otherwise, they are not. Simple. ए का ब्लड ग्रुप ए और ए बी दोनों में सरवाइव कर जाएगा क्योंकि ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप में और ए बी ब्लड ग्रुप में both themselves have a antigen, so they cannot have antibodies against A. So there A blood group can survive, its RBCs can survive. ऐसा concept है. Similarly for B blood group, if you see, donor is B blood group, so a recipient could have been B or AB, because in both cases the RBC with B antigen are gonna survive as they do not have antibodies against B, because they themselves have B antigen in them. AB blood group person can donate his RBCs with antigen A and B to only AB blood group per recipient. Why? Because AB blood group recipient will not have antibodies against A and B. Otherwise, A blood group, B and O तीनों में क्या होते हैं? Antibodies तो होते हैं against any of this antigen, either A or B, or in O तो both. And person with O blood group with no antigen A and B can be accepted everywhere. So that was the basis. अच्छा, इसके ऊपर से आप ये वर्कआउट कर सकते हो, from whom they should not receive. चलो, ए अगर है तो उसको किस में से रिसीव नहीं करना चाहिए? B. From B and O.
Exactly. B and O, by the way. Only B. No, Sir, sir, na, only B. only Only B. B. O is universal donor. B and AB. AB. Who said AB? Sir, Eisen. करेक्ट है. इमेजिन अगर आपके पास ए ब्लड ग्रुप है एज अ रेसिपिएंट, आपके पास कौन से एंटीबॉडीज हो गए? एंटी बी. तो बी ब्लड ग्रुप के आरबीसी भी अनएक्सेप्टेबल, ए बी के भी आरबीसी अनएक्सेप्टेबल. हाउ मेनी अंडरस्टैंड दैट लॉजिक? Yes, sir. ओके. दूसरा एग्जांपल, अगर आप बी ब्लड ग्रुप वाले रेसिपिएंट हो, आप में कौन से एंटीबॉडीज हो गए? A antibody. Antibodies against A. आप किसका ब्लड एक्सेप्ट करोगे? Sir, O and B. B and O का ब्लड एक्सेप्ट करेंगे. यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी ना. यस सर, ત્યાં फ्रॉम લખ્યું whom मैंने Group नई वाला cannot लिखा. accept. Cannot हाँ. accept. Who from whom they can accept is A and O, and from whom they cannot accept उसमें B and O जाएगा. फाइन. Yes, आगे sir. जाएंगे. चलो आगे. B वाला किसमें से एक्सेप्ट करेगा? B and O. AB वाला किसमें से एक्सेप्ट कर सकता है? A, B and O. क्यों इतने सब में से एक्सेप्ट करेगा? उसके पास एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए और बी है ही नहीं. ए वाले आरबीसी को भी एक्सेप्ट करेगा, बी वाले को भी करेगा, ए बी वाले को भी करेगा, ओ वाले को भी करेगा, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज है ही नहीं. ओ वाला सिर्फ किसको एक्सेप्ट करेगा? O. क्यों? Because they have अगर ये आया तो इसके एंटीबॉडीज ए इसको रिमूव करेंगे, बी आया तो इसके एंटीबॉडीज बी इसको रिमूव करेंगे, ए बी आया तो इसके दोनों एंटीबॉडीज उसको रिमूव करेंगे. एक ही ऑप्शन बचा है, O2O. So if you are a recipient O, you can take the blood from O donor only. How many understand this logic? Yes, sir. Understood. चलो तो ये क्लियर रहा. अब इसको कॉपी कर लो, फिर आगे जाएंगे. 5 मिनट्स का ब्रेक है, उसमें कॉपी कर लेना, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. गिव मी 1 मिनट. So another pattern of blood grouping after ABO type of blood grouping, another one is called RH blood grouping. Basically, out of those 30 antigens, two to I explained, one of them possible is A and another one is B. Out of those 30, one more antigen known as RH antigen. First time such antigen was observed on the RBC of rhesus monkey. rhesus monkey पे उसके RBCs का स्टडी चल रहा था.
तो उसमें से एक एंटीजन मिला. Since then that antigen was identified as Rh antigen. Later it was realized that similar antigen is even found on the surface of human RBC. So there also it was known as Rh antigen. This was also discovered by Karl Lenzner based on presence or absence of Rh antigen. Two possibilities. If your RBCs have Rh antigen, then they are Rh positive type of blood group members. If your RBCs are without Rh antigen, then they are considered to be Rh negative. 80% plus population on the earth is Rh positive. 20% approximately is the percentage of population, human population on earth, which is having Rh negative type of blood group in them. इंडिया में, अफ्रीका में RH पॉजिटिव का प्रपोर्शन 80% से भी थोड़ा ज्यादा पे होता है. Now assuming that these are the blood groups A, B, AB and O, and they do not have Rh factor, so these are also identified as A negative, B negative, AB negative and O negative. But in case if I believe that they all have Rh antigen on their surface, so I may find it to be A positive, B positive, AB positive and O positive. 8 varieties of blood groups will be created over there, considering both of them together, AB, O blood group as well as Rh blood group. बोलिए, पता चला क्या आपको? How many have understood what I have explained? चलिए A नेगेटिव को डिस्कस करते हैं. A नेगेटिव पे कौन सा एंटीजेंस होगा और कौन सा नहीं होगा? Antigen A will be there and B will not be there. Okay, A present but B and Rh are absent. चलो A पॉजिटिव के RBC के ऊपर क्या होगा? Antigen A present, Antigen A present, A present, Rh present and B absent. B absent. Absolutely right. फिर से B नेगेटिव and B पॉजिटिव का पूछूं. First of all B नेगेटिव के बारे में पूछता हूँ. Which one should be there? B antigens are B present. and antigen A. Antigens Rh and RH A absent. B पॉजिटिव में क्या present? Rh and B Antigen present, B and antigen RH are Rh present and antigen A is absent. आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो which ones are present and which ones are absent? Antigen A and B are present and and Rh RH absent in absent. negative, and in positive Rh present. A and B also present. Okay, और O नेगेटिव में और O पॉजिटिव में? A negative है, do not have Rh. O नेगेटिव में क्या present? O no. O negative don't have antigen. Don't have Don't antigen. have Then Rh. A नहीं, and B. ऐसा वर्ड मत And बोलो, ऐसा वर्ड मत बोलो कि no A antigen. and B specifically, A and B हाँ, antigens are not A present. absent, B absent and RH Rh absent. ऐसा absent. बोलो. And in positive one, A specifically A and B absent and Rh is present. 8 ऑप्शंस आपको समझ में आ गए बच्चों? 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज मैंने आपको एक्सप्लेन की. समझ में आ गई आपको? Yes, sir. अब इंडिया में जो ब्लड ग्रुप्स है ना, उसका थोड़ा प्रोफाइल आपको मैं दे देता हूं.
A positive 30%, A negative 6%, B positive 9%, B negative 2%, AB positive 4%, AB negative 1%, O positive 39%, O negative 9%. Which is the most abundant? O positive. O positive. Positive. And which is the least in proportion? AB negative. AB negative. पता चला आपको? कंबाइनली A कितना है? 36%. कंबाइनली B कितना है? 11%. कंबाइनली AB कितना है? 5%. और O कितना है? 48%. सबसे ज्यादा O है, सबसे कम AB है. आपको इतना समझ में आता है? हाँ जी, Yes, पूछ sir. रहा हूँ मैं आपको. Yes, sir. Yes, एक और sir. चीज, एक और चीज. ये जो 8 ब्लड ग्रुप्स है आपके पास, इस 8 में से यूनिवर्सल डोनर कौन सा? कौन सा वो O जिसके negative. आरबीसी को O हर negative. कोई एक्सेप्ट कर लेगा? O negative because no antigens are present on it. नहीं, ऐसा नहीं बोलने का. क्या The बोलने surface का? of RBC. Sorry. No antigen. On the A to surface of no RBC. antigen. गलत गलत गलत. No Absent. antigen. Not A antigen, not B antigen, not RH antigen, antigen. not the 3. बाकी के 27 में से तो कोई हो सकते हैं ना? Yes, So yes, out of sir. these 3, A, B and RH, none of them is present. ऐसा specify करने का. Out of A, B and RH, none of them is present on RBC. So it is O negative. And that will be acceptable everywhere. क्योंकि RH पॉजिटिव में भी जाएगा या RH नेगेटिव में, उसके पास RH का फैक्टर भी नहीं है, A भी नहीं है, B भी नहीं है, कहीं पे वो अपोज नहीं होगा. आपको समझ में आया? चलो, तो Yes, इसको, sir. इसके लिए क्या वर्ड यूज किया? यूनिवर्सल Donor. डोनर. इसके आरबीसी कहीं पे भी फिट हो जाएंगे. अब मुझे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है वो बता दो. AB positive. AB positive. ऋषि एक्सप्लेन. यू सेड AB पॉजिटिव. क्यों AB पॉजिटिव बोला वो भी एक्सप्लेन कर दो, ताकि मैं लिख लूं कि इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है. क्यों ऐसा? ऋषि, ऋषि, was it you only? No, sir, it was me, Khushi. My mistake. खुशी, आप बोलिए. Sir, क्यों AB? because they have antigens A, B, and antigen RH present on them. So Hello. they cannot produce antibodies against A, against B, and even against RH. वरना उनके खुद के आरबीसी को डिस्ट्रक्शन हो सकता है. आप लोग समझ रहे हो? Are you guys getting this point? साले चल रात को करेंगे चले. बोल. Purva Rathod, you should unmute yourself. नहीं करना. How many understand that AB positive is universal recipient because it has A antigen, B antigen, and RH antigen present on RBC? So cannot have antibodies against A, B, and RH in its plasma, or else its own RBCs will be damaged. So we say
It is universal recipient. अगर आपको ये क्लियर हुआ तो ही मैं आगे जाता हूँ. Yes, sir, clear. You are the only one saying, no, others need to give Yes, response. sir. Yes, sir. अच्छा, गालव, जुगल, श्रेया, आप लोगों के लिए खुशी, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन. अगर डोनर ए नेगेटिव है और रेसिपिएंट ए पॉजिटिव है, so will this blood transfusion be successful or not? All are wrong. Galav, Khushi, Zainil. It will be successful. Rudra, can you explain how? Yes, sir, because in an A positive blood group, it has antigen against Antigens against RH group. देखिए, डोनर अगर ए नेगेटिव है and if recipient is A positive, it will be acceptable. Why it will be acceptable? A is carrying which antigen? A blood group वाला RBC डोनर कौन सा एंटीजन कैरी A. करेगा? A. और A पॉजिटिव में भी A होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इट विल बी एक्सेप्टेबल. अब मैं सिनारियो को चेंज करता हूं. Will this be acceptable or not? Zenil, can you justify why not? दोनों का A ब्लड ग्रुप तो है, तो फिर क्यों not? Sir, because the recipient has A negative, so it will oppose RH antigen and its antibody. Exactly. ये जो डोनर है उसके पास A एंटीजन है, रेसिपिएंट के पास भी A है, तो वो तो अपोज नहीं हो जाएंगे. बट डोनर के ब्लड ग्रुप पे RH जो एंटीजन है, वो जब रेसिपिएंट में जाएगा तो रेसिपिएंट तो A नेगेटिव है, उसके पास तो RH है नहीं. तो when the new RH antigen will arrive, it will produce antibodies against RH and will destroy them. समझ में आया आपको कंसेप्ट? Yes, sir. तो अगर आपके पास डोनर और रेसिपिएंट दोनों का नेगेटिव नेगेटिव है सेम ब्लड ग्रुप में, तो एक्सेप्टेबल. दोनों पॉजिटिव है तो भी एक्सेप्टेबल, क्योंकि अगर एक के पास RH पॉजिटिव है, डोनर है, रेसिपिएंट भी RH पॉजिटिव है, तो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि खुद के RH के अगेंस्ट में भी वो नहीं बना सकता है एंटीबॉडीज. RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद के अपने RH एंटीजन को ही डैमेज कर लेंगे. डोनर अगर नेगेटिव है और रेसिपिएंट पॉजिटिव है तो भी एक्सेप्टेबल. क्या एक्सेप्टेबल नहीं है कि डोनर RH पॉजिटिव हो और रेसिपिएंट नेगेटिव हो? उस सिनारियो में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है. ये RH से रिलेटेड मैंने एक्सप्लेन किया. आप में से किसको पता चला? नहीं पता चला तो इतना लिख लेने का, RH positive person can never produce antibodies against RH factor. लिखो, RH positive person cannot produce antibodies against RH antigen. दूसरी लाइन लिखो, RH negative person can produce antibodies against RH antigen if RH antigen is received in his or her body. पहले से रेडी नहीं होते हैं,
बट अगर RH एंटीजन किसी के बॉडी में आता है, RH नेगेटिव बॉडी में, तो फिर वो पर्सन RH एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकता है. Got it or not? Khushi Desai, you are raising hand. Do you have any question? Yes, sir. Sir, the बोलिए. acute donor and recipient, so it is only possible provided that the donor and recipient are from the same ABO blood group. हाँ, वो कॉम्पेटिबिलिटी तो पहले ही होती है, उसके बाद की मैं RH वाली बात कर रहा हूँ. वरना वो तो अच्छा, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन ये B नेगेटिव और A नेगेटिव, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा. तो मैं तो क्या बोलता हूँ कि सेम ब्लड ग्रुप के है और उसके बाद अगर दोनों नेगेटिव है तो भी एक्सेप्टेबल, दोनों पॉजिटिव है तो भी एक्सेप्टेबल. सेम ब्लड ग्रुप के नेगेटिव डोनर में से पॉजिटिव रेसिपिएंट में भी एक्सेप्टेबल, बट सेम ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव डोनर में से रेसिपिएंट नेगेटिव हो तो वो अनएक्सेप्टेबल. बोलो, क्लियर? Yes, sir. हाँ, दिस इज RH फैक्टर, बट पैरेलली इसके साथ वो जो देखना है वो ABO तो ऑलवेज चेक करना है, उसके बाद RH वाला आएगा फैक्टर. गॉट इट? हाँ, sir. चलिए, आप सबके लिए क्वेश्चन है. एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है, इंजर्ड पेशेंट, सीवियर इंजरी. Within 5 minutes, blood is to be given, or else he will die. There is no time to check his blood group. Doctor himself gives his blood to the injured patient without checking the patient's blood. What must be the blood group of doctor? O negative. O O negative. O negative. negative. एग्जैक्टली उसको पता है कि चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप होगा पेशेंट का, उसको खुद का ब्लड ग्रुप पता है, ओ नेगेटिव है. दैट मीन्स व्हाट? न तो उसके पास ए एंटीजन, न तो बी एंटीजन, न तो RH, वो कहीं पे भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा. तो एक बार तो पेशेंट बच जाएगा, बाद में देखा जाएगा जो भी हो सकता है. समझ में आया? Yes, sir, understood. अच्छा, उसी डॉक्टर का फैमिली, लेट्स से उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ और उनको किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया और डॉक्टर को पता चला, तो डॉक्टर ने ये एडवाइस दे दी, कोई भी ब्लड मेरे फादर को चढ़ा दो, चलेगा. तो उसके फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? AB positive. AB AB positive. positive. हाँ, उसको पता है कि AB पॉजिटिव है, मींस किसी को भी एक्सेप्ट कर लेगा वो, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है. कोई भी ब्लड डालो, उसमें A एंटीजन, B एंटीजन, RH तीनों है, तो वो किसी भी एंटीजन को रिजेक्ट नहीं करने का कैपेसिटी रखता है. सो that was about the profile of ABO blood group and RH blood group. Because of the initial disturbance for 10 minutes regarding the connectivity, it happened. We could not start it on time. So one topic we are left with, we could not complete it today. 15 minutes are not sufficient for that topic. So I hand over to ma'am. Madam, are you there?